सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I welcome everyone who are in the temple as well as who are online in our study of Srimad Bhagavad Gita. We are going to go further on our sloka 13th on chapter 4. It's a very debated sloka. As we saw last time, it has been argued that this sloka is representing the inequality in Sanatan Dharma, and we were looking into it, how this misrepresentation has been done, how that has been come to the present situation. And I found that there are so many questions which came up after our session last time, that there is an inequality, there is an inequality we see now, and what it is, and is it really it was there? Is it that it was in Sanatan Dharma? The question, very first question is it that it was in Sanatan Dharma, or is it the Sanatan Dharma is advocating the inequality? That's a question. So so many questions came up, and then regular questions, ब्राह्मण को बड़े गिनते हैं, ब्राह्मण सबको अछूत मानते हैं, ब्राह्मण के पास ज़्यादा पैसा होता है, ब्राह्मण को सब लोग पैर क्यों पड़ते हैं, बाकी में क्या भगवान नहीं है क्या, वगैरह वगैरह वगैरह, thousands of questions. Now this is a very large topic, so we cannot take the whole thing now here, but we will try to see that in next 45 minutes. We'll try to understand it in a more true sense. So we'll take a little deeper dive in the subjects, and also this will help us in cleaning up the concept of varnashram, and hence the expected to reduce the animosity and misconception of having a caste system in Sanatan Dharma. This is one of the biggest one. So let me chant the sloka first. What sloka it is? 4th chapter, 13th sloka. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. And we were on the first part of the first stanza, Chaturvarnya Maya system. The God is telling that the 4 categories are created by me. हाँ, हमारे भगवान ही बोलते हैं कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं. What does it mean? So today we will try to evaluate it based on the exact understanding, the 2 schools of thoughts for having how the caste system has been identified, imbibed into and over the Sanatan Dharma system, misunderstood. So we'll take examples also in this, one of the example. So we'll take the example of Brahmin, one of the most beaten varna, and also we will take how these examples have been created. So we'll go, so hence first we will look at the first school of thoughts, and what we call it as a Western school of thought. Why Western? It is not only the geographically Western part, but it is Western because of the major part of the people in that geographical area are thinking in that way. That is why it is Western. So if the same thinking person is also in the eastern part of the globe, they are still from the same school of thought. But we will name it as a Western thinking. Now, when we see in Western thinking, it is important to know that the Western thinking people, or these people, are the people who in last 5 or 7 centuries invaded the rest part of the world. They invaded them, they went over them with the power and technology, and they are the people who went to these distant areas which they name as their colonies, and then they observed something, and then they
they compiled it and put it in front of the world. This is what historically it happened. But let us first look at the school of thought, which is what in each side, eastern and western side. So in western side, what is considered as a great life? कौन से आदमी को हम सबसे बड़ा गिनते हैं, कौन से व्यक्ति को हम ऐसे गिनते हैं कि जो पूज्य है, जो अनुकरणीय है, somebody who is privileged and influential, which is called as a elite. In western thinking, who is elite? ऐसा कौन है जिसको अनुकरण कर सकते हैं? We can follow the path. Who is the person who is identified like that? That is a person who gathers and wins most resources. सबसे पहले वो बंदा, the person should be having and winning and gathering most resources. Industrialist, celebrities, sports stars, these are the people. ये अनुकरणीय है. कैसे बनना है? I want to become Michael Jordan. I want to become some other industrialist. That is what is the psychology of the whole society. The school of thinking is that हमें ये करना है. बड़ा होके बेटा तू क्या बनेगा? मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनूंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री लगाऊंगा, मैं ऐसा बड़ा बनूंगा. That is the psychology. That is the whole school of thought which thinks that how a person is supposed to be called bigger and a more better person by the material gain, the material part which he has in his authorization. Another is that he can control physically through power or politics. He can control as many people and make them follow his orders. A person who has got this capacity, वो बंदे को फॉलो करना चाहिए. हाँ, बड़ा होके मेरा बेटा बड़ा राजा बनेगा. हाँ, he will become a big king. He will become a very famous politician. He will rule the world. That is the thinking of this school of thought. ये school of thought के अंदर ये thinking होता है. He is a ruler of the earth and he is a owner of the resources. हाँ, दुनिया को जीतने निकलेगा. अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरी दुनिया मेरे पैर के नीचे होनी चाहिए. दिस इज अ स्कूल ऑफ थॉट. दैट इज वन स्कूल ऑफ थॉट. Hence, a person in his life is considered as an ideal. They are considered as elite. उनको elite कहते हैं. In this school of thought, who is elite person? Privileged and influential. इसको हम elite कहेंगे. In this school of thought, these people are set at the top of the society in the hierarchy. जो society की hierarchy, this is a hierarchical society. This school of thought is a hierarchical society. इसमें ऊपर नीचे होता है. वो बड़ा आदमी है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है और उसके पास ज्यादा ताकत है, और इसके लिए वो एलीट सोसाइटी कही जाएगी. जिसको सब लोग उसके चरण चूमेंगे. People will touch their feet. People will give them respect. उसको एलीट कहेंगे और उसकी बात मानेंगे. वो जो रास्ते से चला है वो रास्ते पे हम चलने चाहिए, क्योंकि यही सक्सेस की डेफिनेशन है. The definition of success is by the material gain and by the power you have in hand to control the people. That is the school of thought. That is the school of thought. On the other side, the eastern way, we will say, may not be seriously eastern also, physically, but eastern, because mostly the people in the eastern part are following that school of thought. What do? Eastern side or Sanatan Dharma side, they value and give importance to the moksha. They give value to the value. बंदा अच्छा है क्या नहीं, सबके साथ में प्यार से पेश आता है क्या नहीं. Is a person compassionate? Is a person truly patient outside as well as inside? उसके जीवन में शांति है क्या नहीं, वो सबको एक तरीके से देखता है क्या नहीं. देयर इज अ श्लोक इन श्रीमद् भगवद गीता. हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैना स्वपाके च पंडिता समदर्शिना. पंडित कौन है?
जो ये सबको एक दृष्टि से मतलब एक लेवल में देखता है। हाँ, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है कवि अस्तिनी, जो ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है, कुत्ता है, और कुत्ते को खाने वाला जो है, ये श्लोक में दिया गया है, स्वपाक है च। हाँ, स्वपाक मतलब द पर्सन हु इज अ डॉग ईटर। ये सबको एक लेवल से देखने वाला है, वही सही पंडित है। दिस इज अ श्लोका इन गीता। सो नेचुरली गीता इज नॉट देयर टू गेट द पीपल इन हायरार्की, एब्सोल्युटली नॉट। So let us see how this second school of thought, the Eastern way, anyone who has attained the moksha is a winner, he is a topper, he is most desired and extremely respected person. That is the thing. वो most desired है और extremely respected है. It does not matter if this person or the group of persons like that is very rich, very powerful, or very poor and living very simple and lonely life. Doesn't matter. वो राजा भी हो सकता है और वो एक छोटा सा एक आदमी गुफा में रहने वाला भी हो सकता है. Both these people are considered as great person in सनातन धर्म. उनको महान माना गया. अच्छा, एग्जाम्पल, किंग जनक को विदेही कहा गया. He was a king, but he was considered as विदेही. He was considered as a soul who has attained moksha, जिसने जीत लिया है अपने को, मन को. ऐसा किंग जनक. किंग रघु राजा ने सर्वस्व दान कर दिया. हमारे जो भगवान राम है, उनके जो पूर्वज है, वो सर्वस्व दान कर दिया. नहीं चाहिए मुझे पैसा, मैं मेरे में ही संतुष्ट हूं. ये सब शब्द है. दिस आर द वर्ड्स. मैं मेरे में ही संतुष्ट हूं. सुदामा, नरसिंह मेहता, दिस आर द पीपल. सुदामा पैसे के लिए परवाह नहीं है, मित्र को मिलने के लिए जाता है, मित्र के पास भीख मांगने के लिए नहीं जाता. हाँ, दे वर वेरी पुअर, फिर भी उनको महान माना गया. गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना राजपद छोड़ दिया. बुद्धा लेफ्ट हिज किंगडम, हिज थ्रोन, हिज वाइफ एंड द चाइल्ड, एंड ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट सोल for liberation. So how is the life of this kind of people? How is the life? They do not identify themselves with their possession, and hence his actions are not focused on gathering. The number one quality, ऐसे जो आदमी होते हैं, they do not gather material world, they do not gather people, they do not control people because they are not interested. They have attained a level where all these things are not a material or value to them. He is focused inward rather than outward. And then although outsiders see him living a regular life, राजा जनक है, राजा है, मैं हमेशा कहता हूं, राजा जनक है, दरबार में बैठे रहेंगे. When the people come, please give us some donation, he will give donation. There will be some other people say, oh, there is a justice to be done. This person has done a theft to the other person. He will give a sentence also. He will go on the war and he will kill the enemy soldiers also. He will kill. A person who is killing other people, can he be considered as a great soul? How and why? Very important. Very important. So people think that they are living the regular life, but eventually they experience that he is different, and then they start calling this kind of people as Mahatma, Sadhu, Muni, Maharshi. That is how these names have come. These names, Mahatma, Sadhu, Muni, Maharshi, has not come from the possession that person has. हम बड़े आदमी को इसको कहेंगे वो बहुत बड़ा आदमी है in Western thinking. क्यों? Because he has more money, he has more power. तभी तो उसको बड़ा कहेंगे. बट इन ईस्टर्न थिंकिंग, महात्मा, मुनि, महर्षि, these words are not used for the person who has got that much possession or not, how much possession. That is what is this school of thinking. They think himself as outside and beyond this material existence. ऐसे लोग होते हैं. That is a school of thought. They are focused on achieving fundamental qualities of being human.
and gaining the knowledge and then spreading that in the society for the betterment of the society and peaceful society. These are the people. ये लोग होते हैं, और ये लोगों को ब्राह्मण कहेंगे, ये लोगों को ब्राह्मण कहेंगे. So when a person becomes like that, what happens? People respect these people for their selflessness. Number one, selflessness. Number one, selflessness. Even in Western thinking also, people who have lived like that are respected even today. They are respected today. So people start respecting them. People give them money. People give them money and resources. Why? Because they are guaranteed. They are convinced that this money and these resources will be used for betterment of the society. सोसाइटी की अच्छे के लिए ये आदमी यूज करेगा. क्यों? क्योंकि उसको खुद को चाहिए ही नहीं. He doesn't need it. उसको चाहिए ही नहीं. जो आदमी को पैसा चाहिए ही नहीं, वो आदमी को आप पैसा दोगे तो वो क्या करेगा? लोगों के लिए यूज करेगा. इसके लिए ब्राह्मण को दक्षिणा दो. ये यहां से आया है. This is where it has come. People seek their advice as they will not be biased. They will be well watching, well matching to the true knowledge and truly good for them. That is why they will seek their advice. उसको पैर पड़ते हैं, उसको पूछते हैं, महाराज क्या करें? ये कंडीशन आ गया. In old time, next to the king, there was a seat of the ऋषि. राज्य के ऋषि हुआ करते थे, वो बाजू में बैठते थे. In case of a dilemma or something, the king will ask the advice from the ऋषि मंडल. इसके लिए ऋषि मंडल आया. और ऋषि मंडल के पास पैसा नहीं था, उसके पास कोई सैन्य नहीं था, कोई मसल पावर नहीं था, मगर उसको पूछते थे. उसको पूछते थे. एंड ऑल्सो इन नॉर्मल लैंग्वेज ऑल्सो हम लोग स्टोरी सुनते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टोरीज. एक गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांग के चलता था. सत्यनारायण देव की जय. सत्यनारायण भगवान का कथा आता है, उसमें भी एक गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा के लिए घूमता था. तो गरीब ब्राह्मण क्यों? इफ दे आर एलीट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो एक बहुत पैसे वाला ब्राह्मण था. ऐसी स्टोरियां होनी चाहिए थी, ऐसी स्टोरी बननी. दैट काइंड ऑफ स्टोरी शुड बी स्टार्टिंग. इट्स नॉट देयर. व्हाई? Not because he was not capable to earn. It was not that he was incapable, but his focus is not on earning. इसके लिए गरीब था. वो गरीब क्यों था? वो गरीब इसलिए था क्योंकि उसका फोकस अर्निंग में था ही नहीं. He didn't want to earn money. That is not the focus of his life, the aim of his life. विदुर, an example हम लोग बोलते हैं विदुर की भाजी. सब लोग बोलते हैं, एवरीबडी नोज द स्टोरी, सो नो नीड टू टेल द स्टोरी. बट कृष्ण भगवान आए, विदुर के घर पे गए, विदुर के घर में भाजी बनाई थी, वो थोड़ी सी भाजी थी, वो बची हुई, वो विदुर जी ने के घर पे उसने खा ली. बोलते हैं ना स्टोरी, बोलते हैं विदुर की भाजी, फिर भजन गाते हैं विदुर की भाजी खाई. ऐसे हु वाज विदुर? ही वाज द प्राइम मिनिस्टर. ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द होल किंगडम. धृतराष्ट्र का इतना बड़ा जो किंगडम था कौरवों का, उसका वो प्राइम मिनिस्टर था. कैन यू इमेजिन ए प्राइम मिनिस्टर नॉट हैविंग इवन ए बाउल ऑफ भाजी इन हिज होम टू ईट? हाउ इट कैन हैपन? ऐसा कैसे हो सकता है? यहां तो एक बड़े से एक छोटा सा सरकारी चपरासी रहेगा, उसके घर से करोड़ों डॉलर में करोड़ों रुपये मिलते हैं. तो विदुर के पास एक भाजी का इतना छोटा सा बाउल भी नहीं. कृष्ण भगवान आएंगे उसको खिलाने के लिए. What does it show? क्या बताता है वो? बताता है क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं थी, वो पैसा ही नहीं लेगा. We have got a recent example. One of the company in North America, very big company, बहुत प्रॉब्लम में आ गई, bankruptcy. हमारे इंडिया का एक आदमी था, very big person. He told I will work as a CEO with $1 salary. मैं $1 salary लूंगा 3 साल के लिए. Why? Because I want to use my capacities and I want to see that the company is coming up again. पैसे के लिए नहीं लूंगा. $1. He took $1 salary for 3 years. We know the person. ये थिंकिंग है. Where this thinking is coming from? कैसे? Most educational gurukul were run by Brahmins. Free of charge. खाना पीना रहना मुफ्त में.
हाँ, और पढ़ो, पढ़ाई भी मुफ्त में. That was Gurukul. It was not a business. The Gurukuls were providing free food and education to all. And even today, people donate to Brahmins. ब्राह्मीण को देते हैं ना, दक्षिणा देते हैं, $5, $10 देते हैं. क्यों देते हैं? वो पुरानी अभी भी याद ताजा है. That old time impression is still there, that if I give some money to Brahmin, he will use it for the society. He will use it selflessly, and they are expected to do that. If a Brahmin is not doing it, he has to think once again. They are expected to do it. पहले के जमाने में ब्राह्मण के घर पे जाते थे, वो कहीं भी जाइए, अभी भी, इवन टुडे यू गो टू नासिक, यू गो टू वाराणसी, you tell them I am coming from this and this village, and he will say, oh, ये आप तो हमारे हैं, आपका गोत्र, हम आपके गोत्रज ब्राह्मण है, आइए आइए खाना खाइए. You can go and sleep at his place, you can eat without any money, free of charge. ब्राह्मण खिलाते थे, रखते थे, सिखाते थे. That is Brahmin. So now when the invaders came, we already spent 20 minutes on two schools of thoughts. So when the invaders came, what did they see? What did they see? Have you ever wondered, हम लोग कभी भी जाते हैं, have you ever wondered that whenever we see something very new which is not understandable by us, what do? We try to compare that with our previous experience. Simple thing, example, Burger King. You go and you buy a burger, a brand new person who has come from India or somewhere, you show him this is a burger, he will say, ये तो वड़ा पाव है. They will say, ये वड़ा पाव है. हमारे इधर वड़ा पाव ऐसे ही बनता है. ये बर्गर इज वड़ा पाव. पैटी इज अवर वड़ा, एंड दो पाव के बीच में, between two bread pieces. So burger is vada pav. You compare, that is a human nature. So when the invaders came, what did they see? They see that the people are influenced by a group of people called as Brahmins. They are influential, they are respected, they are valued, and even to some extent they are controlling how the society should be running through the education, through training, through compassion and explaining. Brahmins were going villages to villages. गांव गांव घूमते थे, घर में बैठ के लड्डू नहीं खाते थे, गांव गांव घूमते थे, लोगों को मिलते थे. इसीलिए तो कुंभ है, द होल कुंभ थिंग. We will divert, but why Kumbh? Why after every 13 years so many sadhus are meeting just to take a dip in the water? It was to discuss. After 13 years the situation has changed, technology has changed, nature has changed, environment has changed, population amount has changed, demography has changed. So how to apply our standard principles, our Sanatan principles in the next 13 years in the society? That is what the कुंभ means. थिंकिंग होती थी, बड़े बड़े ऋषि मंडल आके मिलते थे, क्या करना चाहिए, डिस्कशन होता था, शास्त्रार्थ होता था, और लोग मिलते थे. That is कुंभ. Anyway, let us focus on this. So when they come in, they saw, when the invaders came, they matched it with their word of elite, privileged and influential, with their concept of caste system. Last time we talked about it, where the word caste has come from. Caste means for elite. समाज का ऐसा वर्ग जो इन्फ्लुएंशियल है, जिसको लोग पैर पड़ते हैं, जिसको फॉलो करने के लिए लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, ऐसा वर्ग जिसको एलिट कहते थे, उसको कास्ट सिस्टम थी. उन्होंने देखा कि यहाँ आके भी ब्राह्मण्स आर कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लेवल, रिस्पेक्टेड, इन्फ्लुएंशियल. So they told that in Sanatan also there is a caste system. That is how the whole thinking that Sanatan में caste है, ये इसका बीज है, उसका बीज यहाँ है. The seed is in the Western thinking that anybody who is elite, anybody who is powerful is a person who is supposed to be the most respected person. Material world के साथ में जुड़ा हुआ वर्ड है elite. Not in the eastern side. Not in the eastern side. We have to think. And hence they said that there is a hierarchical society in Bharat and Brahmins are at the top. And winners are writing of the history. We know. उन्होंने लिख दी.
Let us see some examples for the lower level people at that time. They were deprived of education. ऐसे कहते हैं, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था. Rama went, भगवान राम है, he went from north to south and he talked to all this kind of people. All these people. We know, Vanar come, and those people are signaled. They are not actually physically a monkey, but they are the people. Monkey मतलब क्या, वानर मतलब क्या, जिसका कोई फोकस नहीं है, कभी ये डाल पे कभी वो डाल पे. They are not focused in their life. उसको monkey कहें. If they are focused, their energy will be utilized for the society. We know हमारे हैं हनुमान जी. शक्ति का ज्ञान, शक्ति का ज्ञान मतलब क्या? फोकस. फोकस होगा, शक्ति का ज्ञान होगा, शक्ति का ज्ञान होगा, आदमी कुछ भी कर सकेगा, कुछ भी कर सकता है. सो वानर, ये सब लोग थे. वानर, वल्चर, bears. He talked to them, he talked to Shabri. So if there is no education, how a common language is identified? अगर ये लोगों के पास में कोई एजुकेशन नहीं था तो ये राम बोलते थे कैसे समझेंगे? There was a common language all across the Bharatvarsh. So there is education. वाल्मीकि wrote रामायण. वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया. कैसे लिखा? अगर वो पारधी, वाल्मीकि वो पारधी, killing animals, birds and people, looting people. वो पारधी था, उसने रामायण लिखा. अगर वो अनएजुकेटेड है, फॉरेस्ट ड्वेलर है, तो वो रामायण कैसे लिखेगा? उसको संस्कृत कैसे आएगी? इतना टॉप लेवल संस्कृत. हाउ ही विल बी नोइंग? If he is a illiterate dacoit of forest, पारधी, ऐसा तो नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता. How they were having same language? How it can happen that Valmiki, a robber, can write a Ramayana in Sanskrit? Another thing, he is told that they were deprived of upper positions. ऊपर नहीं आने देते थे. Because this is a ऊपर नीचे is a caste system. In a value based society, there is no ऊपर और नीचे. जिसको वैल्यू है तो वो गरीब से गरीब है, उसको भी लोग पैर छुएंगे. तो वहां ऊपर नीचे है ही नहीं. There is no up and there is no below like caste system is having it. It is a value based society. It is not a possession based society. So there is no depriving of upper and lower level. अनटचेबिलिटी, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा टॉपिक. अनटचेबिलिटी. We can talk on these points for years and years, but unfortunately we don't have the time and our focus is not that. Our focus is on Srimad Bhagavad Gita. So we will talk about some points here. Untouchability. Untouchability is to avoid contamination, psychological and physical. We just now talked, ब्राह्मण थे, गांव गांव जाते थे, हर एक लोगों को मिलते थे. सो कॉल्ड छोटे से छोटा और बड़े से बड़े लोगों को मिलते थे, जाते थे सब जगह. नरसिंह मेहता भी हरिजन वास में जाके भजन गा के आए. जाते थे. तो कॉन्टेमिनेशन, सोसाइटी में अगर एक आदमी है जो सब जगह जाता है तो उसको कॉन्टेमिनेशन हो सकता है. दे कैन कॉन्टेमिनेट डिसीज एंड अदर थिंग्स इन द सोसाइटी. फिजियोलॉजिकल. तो क्या? छूना नहीं, ब्राह्मण देवता को दूर बिठाना, उससे ज्ञान लेना. वो दूर बैठेंगे. अभी भी यहां मेरे पीछे ही है ना, दूर बैठते हैं ना, मंदिर में भी दूर बैठते हैं. ऊंचा आसन है उसका. कैसे? फिजिकल कॉन्टेमिनेशन. सोसाइटी शुड सर्वाइव फिजिकल कॉन्टेमिनेशन एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेमिनेशन. ब्राह्मण भी आदमी है. सामने वाले आदमी के गले में सोने का हार देखा, 4 तोले का, डिगा सकता है उसको. नहीं डिगना चाहिए. साइकोलॉजिकल कॉन्टेमिनेशन नहीं होना चाहिए. आफ्टर सेइंग ए पावरफुल एंड पोजीशन पर्सन. इसके लिए दोनों को सेव करने के लिए ब्राह्मण इज अस्पृश्य, जिसका स्पर्श नहीं होना चाहिए. दैट इज द मीनिंग. वी कैन टॉक अबाउट दिस पॉइंट इन वेरी लेंथी वे, बट दैट इज हाउ इट केम. वर्किंग विद इन्फेक्शियस पीपल. कहीं भी जाते थे, गांव गांव घूमते थे. बीमार हो जाएगा आदमी, एक जगह की बीमारी दूसरी जगह जाएगा. वी हैड ऑलरेडी इन 2020 वी हैड अ बिग डिसीज प्रॉब्लम. हम लोगों को प्रॉब्लम आया तो क्या किया? 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस. अस्पृश्य, अस्पृश्य ही बना दिया हम लोगों ने. एक दूसरे को बनाया क्या नहीं? दैट इज अस्पृश्य.
हाँ, जिसको डिसीज लग गया उसको रखो घर में 7 दिन के लिए, उसको कोई मिलेगा नहीं, करेगा नहीं, अस्पृश्य। तो जो ब्राह्मण गांव गांव घूमता था, हर एक लोगों को मिलता था। नारद जी भी गए वाल्मीकि को मिलने के लिए, पारधी, हाँ, कैसे रहते रहेंगे वो, जानवर मारते हैं, मांस पड़ा है, दे शुड नॉट गेट कॉन्टेमिनेटेड। इसके लिए अस्पृश्य, इट इज अस्पृश्य, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। हाँ, बट वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, फिर एकलव्य की स्टोरी का क्या, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट दैट स्टोरी। हाउ द इन्वेडर्स and so-called selfish people utilized the reality to their own gain. Excellent example is Eklavya. Eklavya ka example we all know. For next 15 minutes maybe we'll try to see how it is, how we can look at it. Eklavya, we all know the story. What is Eklavya story? Eklavya was a poor forest dwelling person's son. एक गरीब बिल का लड़का था, and then he is going to where? He is going to Guru Dron's ashram and he is asking, please teach me, I want to be your shishya. And Guru Dron is telling, no, I will not make you, I will not give you admission. So he is telling, oh, and the poor guy is going back to his home in forest, and now he is making a murti, Dron ki murti banai. And then in front of him, he told, okay, now your murti as a Dron is my guru. And then he's trying archery. And then he became a very good archer. And then when the dog came and started barking to him, whose dog? Pandava's dog. Kuru, Kaurav logo ka dog. When he went, he put arrows in his mouth such that his mouth is filled up, but his mouth is not injured. ऐसे कुत्ते के मुंह में बाण डाले कि उसका मुंह भर जाएगा मगर उसको लगेगा नहीं. And after seeing this, Arjun told Dron, oh, आप तो बोलते थे I will be the biggest archer. Now this fellow has become bigger archer. Do something. As if Arjun is envied. So Guru Dron is going and he is asking, you are taking me as a guru? Okay, give me your thumb as a guru dakshina. And the Eklavya cut his thumb and give it to Guru. Oh, what are the things? Depriving education, atrocity to the downtrodden, Dalit. आज के समय में दलित शब्द यूज करते हैं, दलित को इतना नीचे किया, इतना. गुरु द्रोण वेरी बैड पर्सन है ना. दिस इज अ स्टोरी विच वी हियर. This is the story which we hear. So let us go to the story more in detail. Who was Eklavya? Eklavya was son of a guy whose name was Hiranyadhanu. He was the son of Hiranyadhanu. Hiranyadhanu का लड़का था. And who was Hiranyadhanu? Hiranyadhanu was a commander-in-chief of Jarasandh. Who was Jarasandh? Jarasandh was the next door neighbor king. Next door emperor था हस्तिनापुर का. उसके साथ उसकी जमती नहीं थी. Jarasandh always wanted to invade all the surrounding kingdoms. उसका सरसेनापति, commander in chief, that was Hiranyadhanu. And his son is coming and asking, I want to learn. वो भील था. भील कैसे था? Because they were the commander to fight in the forest and mountains. वो जो कमांडर था वो था हिरण्यधनु. And his son is coming and asking, I want to learn. Learn where? Learn in a school where weaponry is being taught. It is a school of weaponry. It is not a school of art, or it is not a school of some other thing. It is a science, the weapon science, the war sciences. That is the school. And he is coming and asking, I want an admission in his school. Imagine there is some terrorist organization. His chief leader of terrorist organization son is coming and asking here in USA, NASA, top level satellite and rocket sciences, and he is telling, I want an admission. Will you give it? क्या आज उसको एडमिशन मिलेगा क्या? वो टेररिस्ट के लड़के को नहीं मिल सकता. He may use it for some other purpose. वो यूज करेगा उसके लिए. तो गुरु द्रोण ने बोल दिया, नहीं देते हैं तुमको. I can't give you admission. And there are other reasons also. Other reason is, गुरु द्रोण का जो आश्रम था वो गुरुकुल नहीं था.
It was a paid education institution by the Kauravas. धृतराष्ट्र की डोनेशन के ऊपर चलने वाला इंस्टीट्यूट था. It was not a municipal school in today's term. It was a private school. So who gives admission to the private school? Who runs the rules and regulations for the private school? The king. The king will ask the Guru Dron, अरे तुमने दुश्मन के लड़के को कैसे एडमिशन दिया जो हमारी वेपनरी, हमारी टेक्नोलॉजी सीख के हमारे ही सामने यूज करेगा. So Guru Dron in both cases, number one, enemy's son, and number two, it is a weaponry thing. He is not the owner, he is just a seller. He is not the owner of the Gurukul. So he told, no, I can't give you admission. And then this guy goes, और उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई. अरे बेचारे ने कितनी मेहनत की. मूर्ति मीन्स व्हाट? If I go to University of Toronto and I say that I want to study something, university will say, no, we are not going to teach you. Okay, fine. I go and I make a similar monogram, a similar marking of University of Toronto, and I say that okay, now I am the disciple of University of Toronto and I am going to learn this. Will university allow it any time? क्या यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी उसका जो मोनोग्राम है वो यूज करने के लिए? नहीं करेगी, नहीं करेगी. कैसे करेगी? चलेगा तो सब लोग यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का सिक्का लगा के अपना सर्टिफिकेट बनाएंगे. नहीं चलता. एंड डॉग, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ डॉग? डॉग इज ए वॉचर. सोसाइटी में वॉच करते हैं. उसने देखा कि अरे ये तो गुरु द्रोण का सिक्का यूज कर रहा है. ही इज यूजिंग हिज नेम टू रन हिज ओन एजुकेशन सिस्टम. So they told him, stop this. And then the Eklavya told, shut up. That is what it is. मुंह में बाण डाल देना मगर मारना नहीं, उसका मतलब होता है. He told him to shut up. And then the dog cryingly go to the Pandavas, the people, the watch people. I forgot the immediate word for that, but whistleblowers. These whistleblowers went back to the Guru Dron and told him, this is what is happening on your name. And then Guru Dron is coming and he is asking, अंगूठा काट लिया. the worst part, इतना दुखी. सब लोग आंखों में आंसू आ जाते हैं. दलित लोग, दलित डाउन ट्रोडन बोलते हैं जब भी तो. उसका बेचारे का अंगूठा काट लिया. बट वी डोंट नो द लैंग्वेज. हमारे में लैंग्वेज में है, उसने अंगूठा दे दिया. अपना अंगूठा मत दे देना. दिस इज अ प्रोवर्ब इन हिंदी विच हैज कम फ्रॉम संस्कृत. अंगूठा देना मतलब क्या? यू कमिट, you promise that I will not be doing this again. So Guru Dron told him that you are using my name, you will not use it again. You will not use it for further education in weaponaries. ऐसा उसने अंगूठा लिया उसका. That is what is called as अंगूठा दिया. उसने अपना अंगूठा दिया मतलब he committed that he is not going to teach this again in future for himself as well as for others on the name of Guru Dron, on the name of city of Toronto, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. अभी से मैं ऐसी गलत यूनिवर्सिटी नहीं चलाऊंगा. कोर्ट में मान लिया. दैट इज व्हाट इज अंगूठा काट के दे दिया. बट हाउ वी आर टॉट अबाउट दिस स्टोरी? हमें कैसे बताया जाता है? ऐसे बताया जाता है जैसे वी आर हैविंग एट्रोसिटीज ऑन द डाउन ट्रोडन पीपल. द ट्रू स्टोरी ऑफ एकलव्य इज दिस. यू कैनॉट टीच ए एनिमी पर्सन द वेपनरी विच यू हैव डेवलप्ड इन योर कंट्री. यह है एकलव्य का स्टोरी. यह है, मगर वो ऐसे सिखाएंगे नहीं. why they will not teach a true method of story. why? Because if you have to win somebody, आप अगर तलवार से जीत भी लेते हैं, if you want to control a society without continuously having a war, what you have to do? क्या करना चाहिए? उनका आत्मसम्मान तोड़ दो. उनका आत्मसम्मान तोड़ दो. कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति को हमेशा के लिए कंट्रोल करना है, उसका आत्मसम्मान तोड़ दो. मार के नहीं चलेगा. मार खा के भी वो कल आके फिर उठेगा. वो कितने भी साल हो जाए, 10,000 साल के बाद में भी वो उठेगा. मगर उसका आत्मसम्मान तोड़ दिया, वो खुद ब खुद अपने मंदिर तोड़ देंगे. वो खुद ब खुद अपने श्रद्धा स्थान तोड़ देंगे. दैट इज व्हाट हैपेंड. और इसके लिए इन्वेडर ने ये जो एकलव्य की स्टोरी है, वी टुक ओनली वन, ए वेरी लिटिल माइक्रो मिनी पार्ट ऑफ द होल बिग psychological thing. If you want to know, you can read it on Google. What Lord Macaulay wrote to the Queen of England. What kind of education system I have developed
so that the future Indians who are going to be getting born will be brown from the skin, but from their heart they will be European, they will be Britishers. It is not written by any Hindu sculptor, it is written by Lord Macaulay himself. That is what is it. किसी को तोड़ना है उसका मनोघात कर दो, उसका मन तोड़ दो, मन तोड़ दिया खलास, आदमी पूरी की पूरी सोसाइटी चली जाएगी. एंड दैट इज दिस इज द एग्जांपल. एकलव्य स्टोरी इज वन ऑफ द एग्जांपल आई वांटेड टू टेक. और ऐसे तो हजारों चीज कर दिए. हाँ, पूछते हैं ना शंकर भगवान के ऊपर दूध डाल के क्या फायदा, बच्चों को पिलाओ. हाँ, अरे क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं, उतना यहां वो बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारा पॉइंट वो नहीं है. हमारा पॉइंट श्रीमद् भगवद गीता है. My biggest worry part here is that when these kind of stories are made and they are misinterpreted, they are telling one very dangerous thing. What is being told that these things, this untouchability, these atrocities are written in Sanatan Dharma. हाँ, तुम्हारा सनातन धर्म ये कहता है कि ऐसा है. तुम्हारा सनातन धर्म अस्पृश्यता में मानता है, उसने लिखा है. देखो, हाँ, ये श्लोक को कोट करते हैं. दे कोट दिस श्लोका, दे कोट दिस श्लोका. और भगवान ने लिखा है चातुर्वर्ण माया सृष्टम. बहुत लोग भागते हैं. लास्ट टाइम आई टोल्ड, हाँ, डरते हैं ये टॉपिक के ऊपर बात करने से, डरते हैं. पीपल आर स्केर्ड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक. अरे रे, बोलना नहीं चाहिए, डरना चाहिए. या तो उनको नॉलेज नहीं है या हिम्मत नहीं है सच बोलने की. So the biggest part here is that the people who want to kill, वो मनोबल को किल करना चाहते हैं, invaders, they will do this. ऐसा करेंगे. आप खुद ही अपने को इतना छोटा मानेंगे. अरे रे, हमारे में तो इतना ही बुरी चीजें हैं, आप खुद ही छोड़ देंगे. That is why they did it. मनोद्घात, आत्मघात. So, what is Brahmin? Let us understand. Only one very big chapter. But Varnavavastha, we will see, think simple. 18th chapter, 42 to 44th sloka. If you have time, read it. Who is Brahmin? Brahmin is a quality. A person who possesses that quality is Brahmin. Shama, tranquility. Dama, Sanyam, restraint. Tapa, austerity, tapasya. Shaucham, purity, shuddhata. Kshanti, patience, dheeraj. Arjavam, integrity, akhandita. Jnanam, knowledge. Vijnanam, wisdom. Astikyam, belief in hereafter life. Parlok mein vishwas. A Brahmin is one who has got these qualities. He possesses this thinking and these qualities. That is Brahmin. That is Brahmin. He doesn't possess anything. He possesses these qualities. He has developed himself to this level of qualities. That is Brahmin. Brahmin वो जो धोती पहनता है, चोटी रखता है, that is not Brahmin. Brahmin is one who has got these qualities. And that is why we have got so many saints. हमारे में कितने सारे संत हो गए जो अलग अलग जगह से आए. महाराष्ट्र के संत बात करेंगे, गोरा कुंभार, he was a pot maker. गोरा कुंभार, तुकाराम, he was a बनिया, दुकान चलाता था वो. गोरा कुंभार था. रहीदास चमार था, मरे हुए एनिमल का चमड़ा काटने वाला आदमी था वो रहीदास. हम उसको पूछते हैं कैसे, क्यों, समझना पड़ेगा. ये ब्राह्मण है. कौन ब्राह्मण है? ये ब्राह्मण है. ये ब्राह्मण है. You have to think. सोचेंगे और फिर पूछेंगे. हाँ, अगर क्वेश्चन है तो पूछना भी चाहिए. You'll ask. तो फिर जन्म से ब्राह्मण कैसे आया? कैसे आया? हाँ, अगर क्वालिटीज है तो जन्म से कैसे आया? ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण क्यों? आई ऑलवेज आस्क, इवन टुडे, पॉलिटिशियन का लड़का ही पॉलिटिशियन क्यों? अक्कल नहीं है फिर भी बहुत मर गया है चीफ, क्योंकि मेरा बाप पॉलिटिशियन है, लीडर है.
आज तो मानते हैं उनको, उसके पीछे दौड़ते हैं, जय हो कहते हैं. So when we come next time, we will talk about this. जन्म का प्रमाण क्यों आया, जन्म का प्रमाण कैसे लिया गया, why we thought, why the varnashram decided even the birth as one of the factor to decide the qualities, कैसे लिया गया. And then probably we will complete this varna vyavastha next week when we come again on Wednesday 6 to 6:45 as usual. We'll come again, we will go further on this sloka. We'll try to finish this topic, very big topic, but we'll just touch it to make it as an example and understanding. And I hope everyone will have a happy time. Take care. If the fall is going to start, take your vaccinations and all as necessary. And see you all again next Wednesday 6 to 6:45 at Jayadurga Temple. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः.